Dear students, welcome to today's lecture. These videos are for those students who are going to appear for NEET and JEE. And today's topic is resistance and Ohm's law. Now, what do we mean by resistance? The property of a conductor or a material due to which it opposes the flow of current through it is known as its resistance. And the resistance of a conductor depends upon its nature. The cause of resistance of a conductor is number 1, collisions of free electrons among themselves. Number 2, collisions of free electrons with fixed atoms or ions of the conductor as they get drifted from the negative end towards the positive end of the conductor under the influence of the applied electric field. Number 3, interaction between electrons and lattice vibration. And number 4, trap center. These are the 4 causes of the resistance offered by a conductor. Then alloys have more resistance than the metals because of more traps in them, because of more trap centers in them. Now, the resistance of a conductor depends upon the following factors. Number 1, it depends upon its length, and it has been found that the resistance of a conductor is directly proportional to its length. And number 2, the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. The resistance of a conductor also depends upon its nature and its temperature. If I combine these two factors, that is R proportional to L and R proportional to 1 by A, then we get R proportional to L by A, or R equal to rho into L by A, where rho is the constant of proportionality and is known as the specific resistance or resistivity of the given conductor. Its value depends upon the nature of the material of the given conductor. Now, units of R. The SI unit of resistance is ohm and its symbol is capital Omega. Its CGS unit is absolute ohm, and remember 1 ohm equal to 10 raised per 9 absolute ohm. Units of specific resistance, from R equal to rho into L by A, we get rho equal to R into A by L. Therefore, units of rho equal to units of R into units of A over units of L. That is, the units of specific resistance or resistivity are ohm meter. Then conductance, the reciprocal of resistance of a conductor is known as its conductance. It is generally denoted by capital G. Therefore, capital G equal to 1 over R. The units of capital G are ohm inverse or mho or Siemens, and the symbol for Siemens is capital S. Then conductivity, the reciprocal of resistivity of a conductor is known as its conductivity, and it is denoted by small sigma, and therefore small sigma equal to 1 by rho. Units of conductivity are ohm inverse, meter inverse, or mho meter inverse, or Siemens per meter. Then Ohm's law. You know that according to Ohm's law, the physical conditions of a conductor, like its length, area of cross section, pressure, temperature, etc., remaining the same, the current flowing through it is directly proportional to the potential difference applied across its ends. That is, I proportional to V, or V proportional to I, or V over I equal to constant. This constant is called resistance of the conductor and is denoted by capital R. So V over I equal to capital R. और मैंने आपको यूनिट बताया था कैपिटल R का ओम, SI यूनिट, और एक और यूनिट होता है इंटरनेशनल ओम, एंड 1 इंटरनेशनल ओम इज स्लाइटली ग्रेटर देन ओम, and the exact relation between ohm and international ohm is that 1 international ohm equal to 1.00064945 ohm. Then dimensions of resistance, we know that R equal to V over I. अब I तो फंडामेंटल है 1 over I, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क ओवर चार्ज. तो वर्क की डायमेंशन आ गई M1 L2 T-2, करंट की आ गई कैपिटल ए, और चार्ज की आपको पता है एट. इफ वी सिंप्लीफाई इट वी गेट डायमेंशंस ऑफ R एज इक्वल टू M1 L2 T-3 A-2. और जो कंडक्टिविटी की होंगी ये इनका रेसिप्रोकल होंगी, पावर्स उल्ट जाएंगी, प्लस वाली माइनस हो जाएंगी, माइनस वाली प्लस हो जाएंगी. Then dimensions of resistivity, we know that R equal to rho into L by A, therefore rho equal to R into A by L. Now R is V over I into A by L, and V is work over charge.
and therefore dimensions of specific resistance are 1 over ampere, capital A, work is M1 L2 T minus 2 over charge is at, area of cross section is L2 and length is L1. If you simplify, you get dimensions of rho equal to M1 L3 T minus 3 A minus 2. And the dimensions of conductivity, which is reciprocal of resistivity, will be 1 over these. Therefore, the dimensions of conductivity will be M minus 1 L minus 3 T3 A2. Then remember, Ohm's law is not a universal law because it is not obeyed by all the conducting elements. Then resistances are of three types. Number one, ohmic or linear resistances. The resistances which obey Ohm's law are called ohmic or linear resistances. And therefore for such resistances V directly proportional to I. और आपको पता है जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनमें जो ग्राफ आता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग नॉन जीरो स्लोप. So therefore the graph between V and I, we can take V along x-axis and I along y-axis, or we can take I along x-axis and V along y-axis. Graph will be a straight line passing through the origin. अगर हम V लेते हैं along x-axis और I लेते हैं along y-axis तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मीन्स अगर ये ग्राफ मान लो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा तो इसका स्लोप हो गया टेंजेंट थीटा, तो स्लोप आ जाएगा आई ओवर वी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 1 ओवर आर. लेकिन अगर हम आई लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वी लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, देन स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी वी ओवर आई, दैट इज इक्वल टू आर. अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दो कंडक्टर्स के लिए हमने वी आई ग्राफ प्लॉट किया है as shown in the figure. This graph is for the conductor A and this is for the graph for the conductor B. तो हमने ग्राफ देख के बताना कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. अब क्योंकि यहाँ पे मैंने V लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, I लिया अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसका स्लोप आएगा 1 ओवर V, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. और ये जो कंडक्टर ए के लिए स्ट्रेट लाइन है वो एंगल बनाती है अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप हो गया उसका टेंजेंट अल्फा, और दूसरी लाइन का स्लोप हो गया टेंजेंट बीटा. और क्योंकि अल्फा जो है लेस देन बीटा है, दैट मीन स्लोप ऑफ दी वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टर ए इज लेस देन दैट फॉर कंडक्टर बी. तो जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर ए का कंडक्टर बी से ज़्यादा होगा. देन metallic conductors and strong electrolytes are examples of the ohmic or linear conductors. Then non-ohmic or non-linear resistances or conductors. The conductors or resistances which do not obey Ohm's law, they are called non-linear or non-ohmic resistances or conductors. For such conductors, the graph between V and I is not a straight line but it is a curve, and the examples of such resistances are vacuum tubes and semiconductors. Then there is third type of resistances called negative resistances, and for such resistances current is inversely proportional to potential difference. पहले ओम्स लॉ क्या कहता है कि I proportional to V, लेकिन इसमें क्या होता है I proportional to 1 over V. And the examples of such resistances are tunnel diodes, tetrodes and thyristors. The thyristors are semiconductor devices that can operate only in the switching mode. Now remember, the resistance of a superconductor is 0. The resistance of the human body when our skin is dry is about 10 raised to power 5 ohm, that is 10,000 ohm. And the resistance of the human body when our skin is wet is about 1500 ohm. Then the expression for the resistance of a conductor is R equal to ml over n e square a tau. In this formula, m is the mass of electron, L is the length of the given conductor, n is the number density of free electrons in the conductor, and number density is the number of free electrons per unit volume. And for most of the conductors, its value is about 10 raised to power 29 per meter cube. E is the charge on electron, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. A is the area cross section of the conductor, and tau is the average relaxation time of the free electrons in the conductor, and it is of the order of 10 raised to power minus 14 second. And the expression for the conductance, which is reciprocal of resistance, is G equal to 1 over R. So it will be n e square a tau divided by ml. Then you know that R equal to rho into L by A. So
अगर मैं ये जो आर की दोनों एक्सप्रेशंस हैं इनको कंपेयर करूं, इक्वेट करूं, तो आई विल गेट रो इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्क्वेयर ए टाउ, एंड फ्रॉम दिस आई गेट रो इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वेयर टाउ. So this is the expression for the resistivity or specific resistance of the material of a conductor. Now sigma equal to 1 over rho, तो ये आ जाएगा, ये 1 over rho उल्ट जाएगा, तो ये आ जाएगा n e square tau divided by m, and that is the expression for conductivity. Then microscopic form of Ohm's law, the expression J, which is current density, equal to sigma into E. Sigma means conductivity and E means applied electric field. This equation is called microscopic form of Ohm's law. For non-ohmic conductors, that means the conductors which do not obey Ohm's law, which are also called non-linear conductors. आपको पता है graph between V and I is a straight line. Then the dynamic resistance of such conductors is given by delta V over delta I. Delta V means change in potential difference applied across such a conductor, and delta I the corresponding change in current. Then वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑन स्ट्रेचिंग ए वायर, जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसकी लेंथ बढ़ती है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है. और आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो लेंथ बढ़ने से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से, दोनों फैक्टर्स के कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा. लेकिन वॉल्यूम वायर का जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. अब मान लो आपके पास कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, एंड R1 इक्वल टू रो. रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर. L1 उसकी लेंथ है, A1 उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है. तो हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ को स्ट्रेच करके L2 कर देते हैं ताकि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2 हो जाए. तो R2 विल बी इक्वल टू रो इंटू L2 बाई A2. Therefore let us divide R2 by R1. ये वैल्यूज पुट करो R1 R2 की, तो वो आ गया A1 over A2 इंटू L2 over L1. Also volume means area of cross section into length. तो क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है, that means A1 L1 will be equal to A2 L2, or you can say that A1 over A2 this will be equal to L2 by L1. अब मान लो हम किसी वायर की लेंथ बढ़ाते हैं x%, that means L2 equal to L1 plus x% of L1. तो L2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, L1 plus x% of L1 over L1, or you can say that A1 over A2 equal to L1 plus x% of L1 means x over 100 into L1 divided by L1. So that is equal to 100 plus x over 100. अब ये वैल्यू पुट करो ऊपर जो इक्वेशन आई है 1 उसमें, तो आ जाएगा R2 by R1 इक्वल टू 100 प्लस x ओवर 100, और इंटू आ जाएगा L2 by L1. अगेन L2 is L1 plus x by 100 L1 over L1. L1 से L1 कैंसल, सो दिस विल बी 100 प्लस x over 100 square of this. अब ये 100 दोनों के नीचे आ गया, तो 100 by 100 will be 1 plus x by 100 raised to the power 2. Now because x by 100 is much smaller than 1, and therefore we can use binomial theorem for any index, and using this theorem we get this as equal to 1 plus 2x by 100. ये आ गया 1 plus x by 50. अब 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो आ गया R2 by R1 minus 1 equal to x by 50, or R2 minus R1 over R1 into 100 equal to x by 50 into 100. Now left hand side is R2 minus R1, that means increase in resistance over R1 original resistance into 100. So ये आ गया percentage increase in resistance, that is equal to 2%. So याद रखो 2x% आ गई. So अगर आपने लेंथ उसकी बढ़ाई है x%, तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ेगा, 2x%. अब इसको अच्छी तरह याद कर लो. मान लो वो कहता कि हमने किसी वायर की लेंथ 0.1% बढ़ाई, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ेगा. तो जिस बच्चे को ये याद है कि अगर लेंथ x% बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस 2x% बढ़ता है, वो 1 सेकंड में उसका जवाब 0.2 लिख देगा. अगर 2% लेंथ बढ़ाते हैं तो 4% बिना किसी कैलकुलेशन के. इसी तरह अगर हम रेडियस चेंज करते हैं या एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम एरिया की जगह ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, एंड वी कैन कैलकुलेट द परसेंट इंक्रीज और चेंज इन resistance. That's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. So you should go through this video carefully. पहले पूरा ये चैप्टर पढ़ो और उसके बाद इस वीडियो को देखो, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो. आप देखेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. थैंक यू वेरी मच.